Good evening. 9th Cbse class. Only 2 students. Are there anyone connected online? We are supposed to start with forest, society, and colonialism, right? Is this chapter started in your batch? It's a new chapter, complete new chapter for you, freshly to be taught. I'm your new teacher for history and civics. My name is Bhagyashree and I hope you will enjoy learning with me. Forest society. Colonialism. What do you understand by forest? Forest देखते ही क्या याद आता है? Which pictures comes to your mind when you say forest? Trees, animals, wild animals, jungle, soil, roots, medicinal plants, random trees, forest fires. So many things it will come to our mind when we say the word forest. In India, we have many tribal societies, many tribal communities who stay in these forests. We are a urban people. We stay in city area. We stay in nice big houses built of cement and mortar and other such things. But these tribal people who will be staying in forests, they do not use cement and all to build their houses. They will use whatever forest product they get, wood or this thing, क्या होता है, सूखी घास होती है ना, the dried grass, all such things, bamboos and all they will use to build their houses. What will happen if you say that no tribal society is going to use any of these forest products? How do you think they will react to this? अच्छा लगेगा उनको?
वो तो उसी पे तो जीते हैं बेटा, दैट इज देयर लाइवलीहुड, यस और नो। और उनको उनकी लाइवलीहुड को इस्तेमाल करने से अगर आप या कोई आप जैसे या कोई ब्रिटिशर्स या कोई बाहर वाला आकर उनको मना कर देगा तो उनको कैसा फील होगा? बहुत खराब फील होगा, बहुत गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो इस चैप्टर हम get how the tribal societies who were staying in forest, basically forest में रहने वाले tribal society, not the one who are staying on mountains or hills. Here we will be mainly discussing about what forest laws were brought up, how things were made difficult for those people who used to stay in forest. What do you understand by the word deforestation? क्या होता है deforestation? Cutting of trees, cutting of forests. Do you know the opposite of deforestation? Afforestation. Very good. That is to plant trees. So here in this chapter we will see that how deforestation was basically done, and around 13.9 million square kilometer of forest area was cleared of all the forests just in order to develop industries. अपने इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री से तो फायदा होता है ना, हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हम ले जाकर बेच सकते हैं मार्केट में। पर फॉरेस्ट से क्या फायदा? फॉरेस्ट से तो कोई फायदा नहीं लग रहा था ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट से कोई फायदा नहीं लग रहा था। दे वर फीलिंग दैट देयर फॉरेस्ट्स आर जस्ट unproductive, they are of no good use to us. फॉरेस्ट तो बस खड़े हैं वहां, हमको क्या फायदा दे रहा है? But if we use them for making some agricultural land or for cultivation or for making any industry, then that is going to reap us much more monetary benefit. That is what they thought, and they cleared off so much of forest. To be very specific, they have given you a year 1600. 1600 में बच्चा कितना था? We had around 1/6 part in our cultivation. मतलब जहाँ खेती बाड़ी होती थी ना, that area of India was just 1/6 part which was taken under cultivation. इसे समझना है तो देखो, consider this circle to be India. Okay, we will draw and divide it into 6 parts. Okay, तो इसका 1/6 part हो गया ये इंडिया का जो लैंड है ना बेटा, उसमें से only this 1/6 part was used for cultivation. But later on, when the British started making its colonies in India, उन्होंने लगभग आधे लैंड मास को क्या कर दिया? कल्टीवेशन में दे दिया। कौन से? एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन में। और ये जो आधा उन्होंने कर लिया ना एग्रीकल्चर कल्टीवेशन में, naturally they must have taken land by cutting the forests. यस और नो? ये लैंड तो कहीं से पैदा होके नहीं आने वाला है। इंडिया का लैंड मास तो फिक्स है हमारे पास, वी हैव अवर मैप. So whatever additional they undertook in the form of agriculture or cultivation, they did by cutting down the forests. So India lost around 2/3 part of its land, 2/6 part of its land, 1/3 part of its land in of forest for developing the cultivation or agricultural product. अब उनको ना क्या लग रहा था बेटा कि हम ये जो लैंड है जो कल्टीवेशन में ले रहे हैं, एग्रीकल्चर करा रहे हैं, दिस लैंड शुड बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग कैश क्रॉप्स. व्हाट आर कैश क्रॉप्स? क्या होते हैं कैश क्रॉप्स? जिससे पैसा आए. यस और नो? कैश मींस मनी, कैश क्रॉप्स मींस ऐसे क्रॉप्स with which you will get money. Yes or no? So cash crops will include cotton, yeah, jute, शुगरकेन. ये बच्चों आज भी कैश क्रॉप ही है. ऐसा नहीं कि उस टाइम पे सिर्फ कैश क्रॉप हुआ करते थे, अभी इनकी वैल्यू कम हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है. Even now in the market, if you ever go for grocery shopping with your parent or a mother, you can see cotton clothes are costliest. वही आपको nylon और rayon के clothes you will get at a cheaper price. And sugarcane or jaggery, if you purchase sugarcane, तो usually कोई purchase नहीं करता अभी, but if you purchase jaggery, that will be costlier. Then if you purchase jute or jute bags or anything of jute material, that's costly. Then sugarcane and many other such cash crops like tea and coffee, they are also costly. They are expensive as compared to other products. अगर आप चावल खरीदने जाते हो तो वो आज तो वो भी expensive हो गया. For any middle class person, any grocery is considered to be expensive only. But among them, these are some which are considered to be cash crops. जिससे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा. Whereas compared to barley, jowar, you will
cheaper price. Ragi, all this will get a comparatively cheaper price. Yeah. So these were considered to be cash crops, and these crops they encouraged to grow. अब farmers कौन से थे? Indian farmers. कैश क्रॉप कौन चाहता था? ब्रिटिशर्स चाहते थे. तो उगाने के लिए किसको फोर्स किया? इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया. समझे यहाँ तक की स्टोरी? एनी डाउट इन दिस पार्ट? ओके. क्यों वो चाहते थे कि यही क्रॉप्स वो लोग ग्रो करें? बिकॉज दीज क्रॉप्स दे कुड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, टेक इट टू यूरोप एंड यूज देम एज रॉ मटेरियल. समझे? इन सबसे वो क्या करते थे? फिनिश्ड गुड्स बनाकर वापस इंडिया में ले आएंगे या अपनी कॉलोनीज में ले जाएंगे और हायर प्राइसेस पे उनको रीसेल करेंगे. समझे? दिस वाज देयर स्ट्रेटजी. व्हाई दे गॉट रिच इन सच लेस टाइम बाय मेकिंग कॉलोनीज. व्हाई यूरोप इज कंसीडर्ड टू बी रिचेस्ट or it got rich gradually. It's because they used to purchase these things at low price, take it to their Europe ले जाते थे एक्सपोर्ट करा के, वहां से फिनिश्ड गुड बनाकर क्या करते थे? वापस इन्हीं कॉलोनीज में ले आकर उनको ऊपर के दाम में हायर प्राइसेस पे उनको बेचा करते. Now I tell you one more thing. You can note it down if you want. Yeah, just note it down. Make pointers and note it down. Noted? So ब्रिटिशर्स को क्या लगता था? दैट फॉरेस्ट आर कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव. फॉरेस्ट से मिलने वाले मेडिसिनल हर्ब्स और व्हाटएवर लीव्स, रूट्स, ट्रीज, वुड, फ्यूल वुड, उनसे उनका कोई मतलब नहीं था. बिकॉज दैट दे कुडंट यूज एज रॉ मटेरियल. What raw material they wanted? Cotton, jute, sugarcane, wheat, all such crops they wanted as raw material. So they felt that forests are what? Unproductive. And they in the year around between 1880 से लेके 1920 तक, यानी इन 40 साल में उन्होंने 6 मिलियन हेक्टर लैंड को फॉरेस्ट से काट कर एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन में वो दिया है. समझे? Let's see the next part. Shall I erase this? Shall I erase this? That your note. इसके अलावा बच्चों को पता है that all the ships that were used in those times were made up of wood. कैसे बनता था? Ships were made up of wood, and the wood that they used to make, for navy और जो भी use करते थे, it was with the help of oak trees. Oak tree का ये wood क्यों लेते होंगे?
Tell me why they must be using only oak tree wood for building ships? Because it is durable, beta. क्या होता है वो? Durable होता है. See, any normal wood, if you will take and you will start building ship with it, then there are chances that in water it may get leaked and it will be destroyed. Very soon your ship will be of no use. So ये Europeans, what did they do? उन्हें तो कॉलोनीज एस्टैब्लिश करनी थी, दूसरों पे जाके क्या करना था? रूल करना था. तो अब आने जाने का कोई जरिया तो था नहीं. There were no airplanes available at that time. अगर होंगे भी तो they were not that well advanced that it can carry lakhs and lakhs of troops and soldiers from one place to other place. So they were mostly reliable on these ships. Yeah, they relied on these ships, and these ships were built up of wood from the tree called oak. अब अपने यूरोप के तो सारे ओक ट्रीज एक काट चुके थे. इनके पास अब इनके यूरोप में ओक ट्रीज बचे ही नहीं थे कि जिससे वो और अच्छे और नए शिप्स बना सके. इन्हें क्या चाहिए था? ओक ट्रीज चाहिए थे और शिप्स बनाने थे. अपनी रॉयल नेवी को क्या करना था? और आगे ले जाना था. पर अब वुड ही नहीं है, ट्री नहीं है, तो वुड कहां से आएगा? वुड नहीं है तो शिप नहीं बन रहा था. So in that scenario, they came to colonies like India, and from here they started cutting the oak trees, and they used to carry lots and lots of wood to their colonies to build ships. समझे? This is one reason why they took deforestation, why they did deforestation. First reason that they started, they wanted cash crops. उन्हें cash crops चाहिए थे because that yielded them money. They thought that forests are unproductive, कोई use नहीं है. Second reason, they wanted to build ships, and for that they needed oak trees. Now let's see the third reason. This is the second reason. Now third reason is sleepers on tracks. Have you all traveled through a local train at least once in your lifetime? Local train से travel किया है बच्चों? बाहर गांव गए होंगे, village गए होंगे. So these trains, you know, they are having tracks like this. Yes or no? Agree? These railings, they are of iron, and these are of wood. These days you get everything of iron only, but in those days these this horizontal lines that you are finding here on my diagram, these were made up of wood, and they are called. क्यों स्लीपर्स बोलते थे बेटा इसको? क्योंकि ये ऐसे लेटे हुए रहते थे ना, रेल की ट्रैक तो ऐसे जा रही है, and these sleepers used to be placed like this, ऐसे लगा देते थे, and the work of the sleepers was to hold these two railings together. जब ट्रेन दौड़ रही है उसके ऊपर, अगर ये स्लीपर्स नहीं होंगे ना तो ये ट्रैक आगे पीछे हो सकता है, and there will be a railway accident. So in order to avoid that, they needed these wood sleepers. और ये स्लीपर्स को बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा फॉरेस्ट कट कर दिया. In Madras Presidency, they cut around 35,000 forest trees just to make these sleepers. कहाँ पे? Madras Presidency में. Are you following, बच्चा, what I am trying to tell you? 35,000 forest trees they cut just in order to make these sleepers. और वो भी एक ही साल में उन्होंने 35,000 trees काट दिए. कहाँ पे? Madras Presidency. And I tell you some these things they are given you. एक mile में, that is in 1 mile, you want to place these tracks or these sleepers, then you need approximately 1,760 to 2,000 sleepers. That means you can imagine कि कितना ज्यादा इसमें यूज होता होगा, कितना ट्रीज को कट करते होंगे just to lay track for 1 mile distance. Okay, you are getting what I am trying to tell you. Should I repeat? कबाब गिर गया था शायद आपका ध्यान नहीं होगा. For 1 mile distance, if you want to lay tracks, you required around 1,760 to 2,000 sleepers, wooden sleepers. So many trees they had to cut down. सिर्फ 1 माइल का, तो ऐसे तो उन्होंने पूरे इंडिया में कितने सारे रेलवे ट्रैक्स लगाए थे. So many trees they might have cut down. Yes, so this was the third reason why they took deforestation. पेड़ काटना शुरू क्यों किया. Now let's see the fourth reason is plantation.
Now plantation means when you are doing a tea or coffee plantation. ये plantations कैसे होते हैं बेटा? पहले तो forest area थी. All that forest area they cleared off. Then they asked European cultivators. Who? European cultivators. क्यों European cultivator ले आए? कैश क्रॉप्स तो हमारे ही फार्मर्स उगा रहे थे, ये भी हमारे फार्मर्स ही उगा लेते. यूरोपियन कल्टीवेटर्स को क्यों लाना पड़ा? बिकॉज टी एंड कॉफी वाज न्यू टू देम. आवर फार्मर्स डिड नॉट नो हाउ टू कल्टीवेट देम. हमारे यहाँ पे जो टी या कॉफी आई है ना, वो ब्रिटिशर्स ही लेके आए हैं. पहले में हमारे एंसेस्टर्स वर नॉट ड्रिंकिंग टी एंड कॉफी. ऑल दीज बेवरेजेस वर ब्रॉट टू अस बाय द ब्रिटिशर्स. हम इंडियंस को पहले से पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है बेवरेज. ओके, so to grow them, to grow this crops of tea or coffee, they brought European cultivators, and these European cultivators started plantation of tea and coffee. And these plantations, you know, they did on the land which was earlier a forest land. तो वो भी काट के उन्होंने forest को clear करके इन plantations को बनाना शुरू कर दिया. Are you getting why they did deforestation in India? 4 points. First, they wanted to cultivate cash crops. Second point, they wanted to construct ships. For that, they had to remove our oak trees and take lots and lots of wood from India to Europe. Third, they needed sleepers on tracks. अब sleepers on tracks यानी कि जो wood के tracks आप देख रहे हो, जो sleepers लगाए गए हैं, all those horizontal diagrams that are done. Not only in India but even in Europe, they were building railways at that time. तो उधर भी उनको चाहिए था, they took wood from India. And the fourth reason they did deforestation in India is because of plantation. They wanted to grow tea and coffee. Any doubt in this part, Raja? Clear everything? अब बेटा जब हम कोई चीज डिस्ट्रॉय करते हैं ना, तो मन में डर बनता है. डर किस बात का बनता है? कि भाई यहाँ से भी अगर ये फॉरेस्ट और ये ट्रीज खत्म हो गए तो फिर हमें कहाँ से मिलेगा? Because India was under the colonial rule of British. Yes or no? Yes. Yeah. Now India में अगर कुछ खराब कर रहे हैं Britishers, तो इंडिया का तो लॉस है ही, बट उसमें यूरोपियंस का भी लॉस. क्योंकि जो वो खराब कर चुके हैं या खराब करने वाले हैं, वो आगे चलकर उनको यूज में तो नहीं आएगा. So the forest that they are cutting today, they will not get the same trees and those forests later in their life. Yes or no? So उनको क्या हुआ? थोड़ा worriedness हुआ कि भाई हमने अपने यूरोप के तो सारे ओक ट्री गिरा दिए और उससे शिप तो बना लिया. अब इंडिया का भी ओक ट्री काट रहे हैं, ये भी लेके जा रहे हैं और शिप बना रहे हैं. तो आगे चल के तो इंडिया में भी ट्रीज नहीं बचेंगे. फिर हमारे लिए शिप्स कहाँ से आएगा? फिर कैसे हम वुड कहाँ से ले आएंगे शिप बनाने के लिए? Yes or no? They were having this guilt and they were having this fear. So what they did? You noted this part? Should I erase? Yeah, write it down. हो गया बच्चा? राइट फास्ट.
अब देखो आगे की कहानी, उनको डर लग रहा था, हमने तो यहाँ का फॉरेस्ट भी काटना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट तो बचेगा नहीं, फॉरेस्ट नहीं बचेगा तो वुड नहीं मिलेगा, and when we will not get wood, then how are we going to build our ships in the later life? So they thought कि इस सिचुएशन को सॉल्व करने कोई एक्सपर्ट का हेल्प लेना चाहिए. So they called a German expert named Dietrich Brandis. किसको बुलाया? Dietrich Brandis. He was an expert in this forestry and agriculture and all that thing. So they called him from Germany and they asked his suggestion. कुछ doubt है बेटा? No doubts ना. So they asked his suggestion कि इस situation को control कैसे करें. So he gave certain ideas and tricks and tips. देखो क्या किया उसने. He first they laid down rules. He laid down certain restrictions. Now what were the rules and restrictions? He said all the tribal families or the villagers, those who are staying inside the forest, they should be prohibited from using the forest wood. उनको मना कर दो, उनको बोलो कि आपको अभी अलाउड नहीं है कि आप जाके उस फॉरेस्ट को काट सको या उस फॉरेस्ट से फ्यूल वुड ले सको. They were not permitted to do that. Secondly, he started a new concept of scientific forestry. What is scientific forestry? Let's see what is scientific forestry. एक पैच ऑफ लैंड है हमारे पास, या लेट्स से दिस इज अ पैच ऑफ लैंड दैट वी आर हैविंग. इस सब में क्या ग्रो किया है? फॉरेस्ट है. ओके, रैंडमली यहाँ वहां ट्रीज ग्रो किए हैं. ये ट्रीज तो कोई भी हो सकते हैं ना, नेचुरल फॉरेस्ट है, अपनी मर्जी से तो कुछ आएगा नहीं वहां पे. नेचुरली जो ट्रीज ग्रो किए हैं दैट आर प्रेजेंट इन दिस फॉरेस्ट. Some may be catechu plants, some may be neem tree, one may be a people tree, the rest may be apple trees. Anything it can be there, right? So what this person, Dietrich Brandis, he said, take a piece of forest, completely destroy it. सारे पेड़ काट दो उस फॉरेस्ट में से. आपको क्या चाहिए? ओक ट्रीज चाहिए, साल ट्री चाहिए, टीक ट्री चाहिए, जिसका वुड आप शिप बनाने के लिए यूज कर सकते हो, स्लीपर्स और ट्रैक बनाने के लिए यूज कर सकते हो. तो वही प्लांट करो ना. Why you are keeping any random trees? Why you are keeping any medicinal or herbal trees? जो ट्री हमको चाहिए, जिसका वुड हम शिप बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, स्लीपर्स और ट्रैक बनाने के लिए यूज करते हैं, we will plant only those trees. And that was done. Only those trees which are used by the British or the European colonies to build their ships or for making sleepers on the track, such as oak tree, sal tree, teak tree, they were planted on this patch of land. अब मान लो एक पर्टिकुलर ईयर में आपको इतने ट्रीज काट लेने पड़ते हैं, for making ship or some other work that you need to cut. Then immediately that very year new trees were replanted in that area. तो जो काट के उन्होंने साफ किया था उस छोटे से एरिया में से, जो यूज करने के लिए ले गए those trees, that was the sal or the oak tree or the teak tree that they took away, that they used to again replant. इसको कहते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट? क्लियर? समझ रहे बच्चा? एनी डाउट? यू कैन आस्क मी. राइट. Do you think that by doing scientific forestry they were doing anything good for the environment? Plant तो कर रहे थे ना, trees तो लगा रहे थे. So why they are not doing anything good for the? One kind of. Yes, very good. They are destroying the diversity. Yes sir. There are so much of diversity. There are so many types of birds, animals. They are habited in only a particular type of plants. हर एक बर्ड का हर एक ट्री में देखो ये जरूरी तो नहीं है. Some birds are favorably residing on a particular type of tree or in a particular type of habitation. So by destroying all that and growing a particular one type of tree, that is sal, oak or teak, they are just destroying the environment.
नाउ दिस वेरी पर्सन, एक तो इसने रूल्स लगा दिए, रेस्ट्रिक्शंस पुट अप कर दिए, किस पर? ट्राइबल लोगों पर, ऑल दोस हु वर डिपेंडेंट ऑन दीज ट्रीज एंड फॉरेस्ट, उनको रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप जा नहीं सकते फॉरेस्ट में, पेड़ नहीं काट सकते, वहां से मेडिसिनल प्लांट्स नहीं ला सकते, ऊपर से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय भी कर दिया. Scientific foresting he started planting only those trees that he required, but he was not satisfied by doing all this. Later he also brought Indian Forest Service into force in the year 1864. ये आज भी है बेटा. This is still functioning in India, and the officers that we have working for Indian Forest Services are appointed through UPSC exams that we conduct. So we still have this in functioning. But उस समय इसका लाने में, why this thing was brought, with the intention of helping the forest be only for the selfish interest of the Britishers. But now it has an overall developmental ideology. It is run by the government of India. We, the people of India, are helping the forest to progress. But उस समय जब ये establish हुआ था ना, its motive was just to prohibit the tribal community getting into the forest, taking their firewood, taking their things that are required for their livelihood. अब आप कोई भी चीज रूल बनाते हो बेटा, unless and until you put punishment for disobeying that rule, will that rule be obeyed? नहीं. जब तक आप कोई रूल बनाते हो और उस रूल को ब्रेक करने पर पनिशमेंट नहीं लगा देते, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे. सो यू विल हैव टू पुट सम पनिशमेंट. सो दैट पनिशमेंट वाज गवर्न्ड बाय इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. ये एक्ट क्या करता था? कोई भी विलेजर अगर उस फॉरेस्ट में जाए या कुछ वहां से चुरा के ले आने की कोशिश करे तो ही वुड बी पनिश्ड अंडर द एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, व्हिच वाज पास्ड इन द ईयर 1865. तो पहले क्या हुआ? 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस लिया और ठीक एक साल बाद 1865 में दे ब्रॉट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. And this act will govern all the rules, laws, restrictions, and it will decide the punishment for disobeying the laws mentioned by the Indian Forest Services. Followed? इतना करके भी इनका पेट नहीं भरा. इन्होंने क्या सोचा कि भाई मेरी तो इतनी अच्छी आइडिया है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की, ये तो कहीं ना कहीं सिखाना चाहिए लोगों को. दिस शुड बी इम्पार्टेड टू द पीपल so that they also will do the same thing for us. So he established Imperial Forest Research Institute at Dehradun in the year 1906. क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक इंडियन इंपेरियल फॉरेस्ट, इंपेरियल मतलब वो क्वीन के नाम से उन्होंने रखा था. इट वाज गवर्न बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. So Imperial Forest Research Institute in 1906 was set up, and it saw to it that if scientific forestry जो है, जो पद्धति है प्लांटेशन करने की, वो वहां पे सिखाई जाती थी. समझा आप लोग? Any doubt up till here? No, please note it down. Done with writing that part? Finished? अब इतना सब कुछ करने के बाद भी बेटा कुछ चीजें और डेवलपमेंट्स हुई. अब कोई भी चीज, कोई भी एक्ट होता है ना, एक्ट स्पेशली इट्स द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट.
Now, when you have to change a law or an act that is being made by the government, you change it by the means of amendment. Amendment क्या होता है? You know what is amendment? Okay, I'll tell you what is amendment. Amendment मतलब आपने अगर कोई रूल बनाया, आपकी सरकार ने कोई रूल बनाया है और उस रूल को कुछ चेंज करना चाहता है या मॉडिफाई करना चाहता है, उसमें कुछ ऐड करना चाहता है, तो इट विल अमेंड द एक्ट. तो इसी तरह जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ना बेटा, दैट वाज अमेंडेड टू टाइम्स. फर्स्ट टाइम इट वाज अमेंडेड इन द ईयर 1878 एंड सेकंड इट वाज अमेंडेड इन द ईयर 1927. फिर इसमें से 1878 वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए. You will have to remember this that in 1878 when this act was amended, मतलब चेंज किया गया था इस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को, तो उसमें क्या चेंज किया था देखिए. सारे फॉरेस्ट को तीन अलग अलग डिस्टिंक्शन या ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए गए थे. इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट है ना, उसको तीन हिस्सों में बांट दिए गए थे. पहला था रिजर्व फॉरेस्ट. The reserve forest it prohibited the entry of any villager inside this forest. किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं. फिर आप ट्राइबल हो, विलेजर हो, फॉरेस्ट में रहने वाले हो, उसी फॉरेस्ट में पले बड़े हो, पैदा हुए, कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे, आप बस वहां अंदर नहीं जा सकते. These are all reserve forest, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या करी थी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करी थी. अपने पेड़, अपने साल, ओक, टीक को they had planted, and if someone goes inside that forest, then naturally they might rob their trees. So what they did, nobody is going to enter inside the reserve forest. They made this rule. Next comes protected forest. Protected forest में आप जा तो सकते हो. If you are a village tribal, you are allowed to go inside this protected forest, but you are prohibited from cutting the trees. You are prohibited from using fire in that trees or in that forest area. If you want, you can collect some roots, some medicinal herb if you want, but you are not allowed to cut any trees there. Then the third category was village forest. आपको जो करना आप करें. It was left up to the discretion of the village people कि आपको जो करना है, प्लांटेशन करना है करो, कटिंग करना है करो. You want to use the medicinal plants, you will use. Fuel wood लेके जाना है लेके जाओ. Okay? So these three were distinction. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हर एक के नीड्स को तो सेटिस्फाई किया जा रहा है. ब्रिटिशर्स को अपने वुड मिल रहा है फ्रॉम द रिजर्व फॉरेस्ट, and there are protected forests as well. Villagers' needs are getting satisfied by the village forest. But still the villagers were not satisfied. Why they were not satisfied, because a major portion of the forest, they had declared it as reserve forest. और ये जो बाकी बचा हुआ था ना, protected and village forest, बिल्कुल ना के बराबर. Understood? The protected forest and the village forest, जहाँ से tribal people अपने लिए जो चाहिए वो चीजें कलेक्ट कर सकते थे, वो बहुत कम एरियाज, बहुत कम जगह थी that they had reserved as protected on the village forest. तो वो बिल्कुल ना के बराबर थी, उनको ज्यादा उससे बेनिफिट नहीं होता था. सारे अगर विलेजर्स या सारे ट्राइबल वहां पहुंच जाएंगे वुड कलेक्ट करने या मेडिसिनल चीजें कलेक्ट करने, तो वो उनको सबके नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता था. इतना बड़ा फॉरेस्ट वो नहीं होते थे that which were allotted as village forest or the protected forest. Did you understand? ये अमेंडमेंट क्या होता है समझा बच्चों? कितनी बार हुआ है अमेंडमेंट? 2 बार. और उसमें से जो पहला अमेंडमेंट था 1878, उसमें ये 3 डिस्टिंक्शंस मिले गए.
बच्चा? यस. सो फॉरेस्ट थे, विलेजर्स को क्या क्या मिलता था? What did they get from forest? See the board and tell me. Fuel wood, medicinal herbs, fodder. Yes, bamboo. Bamboo का इस्तेमाल कैसे होता था बेटा? We know we all have our society compound where we are staying in our buildings. We have a society compound, right? And we have also appointed a watchman to look after that nobody enters our building without signing the register or noting his or her entry. पर उस जमाने में तो ये सब पॉसिबल नहीं था ना बच्चों. People who were staying in villages, they were tribals. They didn't have a very well organized things to maintain their security. So what they did a fencing with the help of these bamboos. अगर आज भी आप देखो ना गांव में वगैरह जाते हो तो ये बांबू के फेंसिंग आपको अभी भी दिखाई देंगे. गए हो कभी विलेज में घूमने? दोनों में से कोई नहीं गया? तो जाओ इस बार कोई वेकेशन प्लान करो, विलेज में जाओ घूमने. So there they have this cane. Cane also they will use for making fencing around their houses, around their farms. They will use this. Then there was another stuff that they made use was that is mahua. महुआ का पेड़ देखा है बेटा बच्चा आपने? महुआ का पेड़ नहीं देखा है? तो महुआ का पेड़ क्या होता है ना, इसमें रात को इसके जो फ्रूट्स रहते हैं ना, सुबह सुबह औरतें विलेज में जाएंगी एंड दे विल गो एंड कलेक्ट द फ्रूट्स ऑफ दिस महुआ प्लांट एंड द फ्रूट दैट दे विल कलेक्ट इट कैन बी यूज्ड टू मेक अल्कोहल. द सीड्स ऑफ दिस महुआ ट्री it will be used for extracting oil. ये oil बहुत rarely खाने में use होता है, but they use it for lighting lamps and all in their houses. This mahua. Then there is one more thing I will tell you. आप लोगों के पास तो अच्छे खासे water bottles होते हैं. आपको कहीं भी जाना हो, you can fill your water in that water bottle and take it. But these villagers and tribal people, they will not get plastic water bottles, right? So they will what they will do? दूधी देखा है बच्चों? वेजिटेबल होती है दूधी, बॉटल गोर्ड उसे कहते हैं. उस वेजिटेबल के अंदर का जो फ्लेशी पार्ट रहता है ना, दैट दे विल रिमूव इट एंड जो एक्सटर्नल उसका जो छिलका है दैट दे विल सन ड्राई एंड देन दे विल यूज इट टू फिल वाटर एंड टेक इट टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे वांट. उसको अच्छे से वुडन कॉक से बंद कर देंगे सो दैट द वाटर विल नॉट लीक फ्रॉम दैट. देन हैव यू ऑल सीन पंपकिन? पंपकिन तो देखा होगा बच्चों. तो पंपकिन में क्या होगा, इसका भी जो अंदर का फ्लेशी पार्ट रहेगा ना, दैट दे विल रिमूव इट एंड द आउटर स्किन व्हाटएवर रिमेन्स दैट दे विल सन ड्राई एंड इट विल बी यूज्ड टू फिल वाटर एज अ पॉट. दे कैन यूज इट. ओके, सो दिस इज हाउ दे हैव टू मेक यूज ऑफ दीस थिंग्स. देन वन मोर थिंग आई विल टेल यू, दैट इज सियादी. व्हाट इज सियादी? सियादी हैज अ साइंटिफिक नेम बहुहीना वहीली. बहुहीना वहीली. बेटा ये क्रीपर होता है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्रीपर? जो एक सपोर्ट का एक किसी फॉरेन सपोर्ट से उसके ऊपर ग्रो करता है वो पेड़. यस, ऐसा स्टिक रहेगा, एक आप स्टिक लगा के रखोगे तो उस पर वो ट्री इस तरह से ग्रो करेगा. दैट्स अ क्रीपर. This Siadi Bahina Bahili tree, this creeper they used for making ropes. क्या बनाने यूज करते थे? They were used for making ropes. Now I have to erase some of this food. Then they used one more thing beta, that is semur. Semur is also known as silk cotton. अब इसका जो पेड़ है ना बेटा सेमूर का, इसका बार्क होता है ना, it is something like this. It is having some protrusions like this. What will this be used for? आपको अगर घर पे ग्रेट करना है कोई वेजिटेबल, you have nice steel graters or plastic graters which are available at market these days. But those villagers they didn't have any graters as such. So they will use the bark of this semur tree. इसमें देखो एक protrusions लगे हैं, तो उसके ऊपर वो अपना जो पंपकिन है या कुकुम्बर है वो ग्रेट कर सकेंगे आराम से. And they will get nice fine peels of those vegetables which they are grating. So semur was used for grating the vegetable. Okay, and they also used many leaves for making disposable plates and bowls. देखा है आपने बेटा लीफ का बना हुआ प्लेट एंड बाउल?
हाँ, मंदिर में वगैरह जाते हो, साउथ में जो टेम्पल्स होते हैं वहां पे दे गिव यू प्रसाद इन दैट ड्रोन, लीफ का बना हुआ बाउल रहता है वो. एंड देन इन साउथ इंडियन वेडिंग्स आल्सो इफ यू गो यू कैन सी द food is served on a leaf, right? Not on a steel plate. Banana leaf, yes, banana leaf they use. So these people used to make so much use of this forest, और उस पे आप ऐसे रोक लगा दोगे, रिजर्व फॉरेस्ट कर दोगे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कर दोगे, तो naturally they will not be happy as they will not be able to use all these things. Please note down. समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या पढ़ा रही हूँ? Anything is there that you don't understand, you please stop me and ask your doubts. Huh? Done? Okay. So when all these restrictions were imposed on the people, that they are not allowed to hunt, they are not allowed to do fishing, तो क्या करेंगे लोग? चुप बैठेंगे क्या? उनको तो चाहिए ना ये सारी चीजें, लाइवलीहुड की चीजें. बेटा आपको कोई ऑक्सीजन लेने से मना कर दे, कहेगा कि आगे आप ब्रीथ ही नहीं करोगे, you always stop breathing. How far you will be able to control your breath for next 5 or 10 minutes maximum? After that you need to breathe because that's necessary for your survival. Similarly ये सारी चीजें उनके भी सर्वाइवल के लिए जरूरी थी. तो कितना भी आप रूल्स लगा दो, रेस्ट्रिक्शंस लगा दो, पेनल्टी लगा दो, ये लोग तो जाते थे उस फॉरेस्ट में, जाते थे, मना होने पर भी वहां से चुरा लेते थे जो भी उनको चाहिए, वो चुरा के वो ले आते थे. और अगर चुराते समय उस फॉरेस्ट का गार्ड उनको पकड़ लेता था ना, तो उनसे क्या करता था वो गार्ड? ब्राइब मांगता था. ब्राइब में क्या मांगेगा वो? या तो वो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट ले जा रहे थे वही ब्राइब में मांग लेगा, या फिर अगर सपोज औरतें गई हैं, इफ women have gone to collect fuel wood from that forest, then they will ask her to give whatever food that she cooks today. Okay, and if it is not given, then they used to punish them. They used to flog them. मारते थे वो, चाबुक देखा है, पतला सा होता है बेल्ट जैसा, उससे मारा करते थे. So people were very agitated and they were frustrated क्योंकि ये तो उनकी ही चीज है ना बेटा, उनका खुद का घर है ये फॉरेस्ट में ये सब जो कुछ भी मिल रहा है, that they had collected from years together. Their ancestors used to collect. ऐसा कुछ नहीं है कि आज से उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया था. और आपका कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो तो बाहर का आदमी है. Yes or no? An outsider, a Britisher is putting this restriction. So naturally they were agitated and they were, thinking of that there should be a rebellion or something like that. But that happened quite later on. Right, this part, hunting and fishing करने पर guards bribe ले लेते थे. Are there always 2 students only in this batch? Okay. Okay, now let's see.
एक और पद्धति होती थी बेटा एग्रीकल्चर की, और उसका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? नाउ लेट्स टेक दिस टू बी अ फॉरेस्ट लैंड। मान लेते हैं कि पूरा एक फॉरेस्ट लैंड है। देयर इज अ ट्राइबल ग्रुप व्हिच इज नेम्ड एज ए। This A tribal group will go and take a small part of this forest. यहाँ के जो forest trees होंगे, he will cut them, and after cutting them, he will burn all these trees. उतने ही area का, पूरा forest नहीं होगा. Just that area where he is going to do that shifting cultivation, that tribal person, he will go, he will cut all the trees and he will burn them. अब आप burn करोगे तो आपको क्या मिलेगा? What do you get by burning wood? Ash, yes, correct. You get ash by burning wood, and ash जो होता है, it's a very good source of potassium, phosphorus, and that is good for soil fertility. So this is what they used to do. They used to get potassium, and they used to get phosphorus, which is good for soil fertility. And after burning this, no, this full area they will burn. And when there used to be a first monsoon rain, पहली बार जब बारिश होती थी ना, then they used to sow seeds. What they will do? They will sow seeds, and then by the month of October or November, they will reap the whatever cultivation they have done. वो उसको reap कर लेते थे. They will harvest it, and then after few years they will again move to a next patch of land. ऐसा करते करते full forest. बेटा पहले सुन लो, आप बाद में लिखना. पहले सुन लो वरना you will miss out what I am teaching. पहले ये एरिया का कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया. ऐसे करते करते वो हर एक फॉरेस्ट के छोटे छोटे हिस्से को इसी तरह ट्रीज को क्लियर करके बर्न करके फिर उसमें दे यूज्ड टू ग्रो देयर क्रॉप्स. एंड आफ्टर रिटर्निंग बैक टू द प्रीवियस लैंड, फिर से उसी पर आने के लिए वो उसे 12 से 18 साल तक ऐसे नहीं छोड़ देते थे. दे यूज्ड टू लीव इट वेकेंट फॉर द नेक्स्ट 18 to 12 years, sorry 12 to 18 years, because it will add to the soil fertility. अगर लगातार उसी जमीन पे वो cultivation करते जाएंगे ना, so naturally the soil will lose its fertility. So they used to take turn by turn. आज इस लैंड पे कर लिया, फिर वहां से छोड़ के इस लैंड पे चले जाते थे, फिर यहाँ से हो गया, फिर यहाँ चले जाते थे. इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? Shifting cultivation, because they used to shift from this land to this to this to this, and before they return back to the previous one, they will leave it vacant for 12 to 18 years so that the soil will regain its fertility. Understood क्या होता है shifting cultivation? अब इसमें भी ब्रिटिशर्स को क्या हो गया? प्रॉब्लम. अब प्रॉब्लम क्या हो गया? एक तो उनको टैक्स कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि आज ये ए ग्रुप का ट्राइब जो है वो इस लैंड पे कल्टीवेशन कर रहा है, कल वो यहाँ चला जा सकता है या फिर यहाँ चला जाएगा, तो उनको ढूंढ के उनसे टैक्स लेंगे कैसे? Yes or no? It will become very difficult. अगर आपके पास कोई फिक्स्ड लैंड है तो वहां पे आपकी जमीन आपके नाम से वो प्रॉपर्टी कर दी जाएगी, फिर वहां पे सुपरवाइजर आएंगे गवर्नमेंट के, फिर वो आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे. यस और नो? पर अगर आप हर बार उसी लैंड पे मिलेंगे तो आपसे वो टैक्स कलेक्ट करेंगे ना. अगर आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते करते यहाँ वहां इधर से इधर करते चले गए, तो देन द ऑफिशियल्स विल नेवर बी एबल टू फाइंड यू एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम यू. यस और नो? So this was the first difficulty that they found. Second difficulty that they found was उनकी जो scientific forestry की थी ना, उसके भी तो forest यही आसपास में हुआ करते थे, where they had done their scientific forestry. मान लो आपने यहाँ का पेड़ जो है forest जो है काट दिया, उसको जला दिया, यहाँ के forest fires वहां भी तो जा सकते हैं ना. These forests lie very close to each other. The forest fire, if they will go there and destroy this for scientific forestry का wood, then it will be a big loss for the British Empire. Yes or no? क्योंकि उन्होंने ये तो काफी मेहनत से डाइट्रिच ब्रांडिस को बुलवा कर सारी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करा रखी थी. अब फॉरेस्ट फायर बहुत जल्दी स्प्रेड होता है. दैट इज थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ड्राई वुड जो होता है ना, चिंगारी भी छोटी सी उड़ के अगर लग जाए, so it will spread and destroy the whole forest in a blink of moment. So that was a very bad thing that it was a possibility. हो तो सकता है ना, ऐसा हो तो सकता है. So because of these two possibilities, first they were not able to collect tax. Second, they had a fear that the forest fire will destroy the scientific forestry. They put a ban on this type of shifting cultivation. Followed? Any doubt in shifting cultivation? अब इस shifting cultivation के बेटा अलग-अलग नाम हैं. कुछ लोग उसे झूम कल्टीवेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे मेवाड़ कल्टीवेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे बेवार कल्टीवेशन कहते हैं.
ऐसे अलग अलग नाम आपके बुक में दिए गए हैं। ध्रा कल्टीवेशन, पेंडा कल्टीवेशन, पोडू कल्टीवेशन, खंदाब कल्टीवेशन, कुमरी कल्टीवेशन. In the on the page number 86 of your NCERT textbook, you will find these names. Further, in Southeast Asia, this was known as the lagging. In Central America, this was known as milpa. In Africa, it was known as chitmene, and or it was also known as tagi. And in Sri Lanka, it was known as chena. So these names you can remember, or if it's up to two or three names would be suffice for you. दो तीन नाम आप लिख दोगे तो काफी. Rest of things you can move it. In the next part we will take in the next class. Till then you want to note this part. अब हर चीज पर रोक लगा रहे थे, हर चीज पर रेस्ट्रिक्शन था. There were rules for hunting, there were rules for fishing. Shifting cultivation भी बैन कर दिया. So people were naturally not happy with all those forest policies that the Britishers were bringing, and this will result into rebellions. And all these rebellions we will learn in the next class. I hope you understood what I taught today. Okay. So till next class, bye.